when three coins are tossed simultaneously. Then possible outcome will be. What will be the outcomes? If you will draw two coins, that is The number of outcomes or outcomes. possible outcome H H S T T H T T, and this is your second, that is your H and T. Now one time you will attach that is your T, and it becomes your HHH. STT. Very good. And your next one will be THH. That is your outcome number. That is your 8 outcome. Question is that honey bee wins the games. Wins कब करता है? Wins तब करता है जब उसके पास 3 heads आते हैं और 3 tails आते हैं, तो wins करता है, अदरवाइज वो लूज कर जाता है। तो यहाँ पे बाकी जो बच के वहाँ पे लूज करेगा, वो यहाँ पे भी लूज करेगा, यहाँ पे लूज करेगा, यहाँ पे लूज करेगा, यहाँ पे लूज करेगा, यहाँ लूज करेगा, यहाँ लूज करेगा। तो क्या होगा? Yes, Pragati, you are right. Okay. Probability of honey will lose the game. 6 upon 8. 6 by 8. That's it. That's 3. Yes. That is 3 upon 4. Yeah, 3 by 4. Very good. Okay, very good. Any doubt, any problems? Now question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं 5. 5 will come up at least once. कम से कम एक बार आएगा, उससे अधिक बार भी आ सकता है. Have you done this question or not? No, sir. Yes, Have you done? Yes, sir. Yes. Yes. Now, question number 24. Where two dice are thrown simultaneously, then number of possible outcome will be. Then possible outcome will be. Numbers बाद में करें. Then possible outcome will be. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your next one is 1, 2, 3, 4, 5, 6.
We just need to play the dice stone 2 times. So we can do it 6 raised to 1, that is 36. Yeah. And here also we 5 comes. So we can do the 5 square, that's 25. 5. Yes. So if we do 5 square, then it will be 25. Yes, sir. And we can exactly Yes, get Priya, 25 by listen. 26. Wait. What are you throwing? What are you throwing? And then Die में कितने फेस होते हैं? How many face in a die? 6. 6 raised to power 2, 36. Why 5 raised to power 2? Yes, sir. Why are you using 5 raised to Yes, power 2? sir, it is. Yeah. It is the connection 5 would not come. Yes. Wait. Just wait. Priya, they will just wait. Wait for 2 minutes. I will clear your concern. Now your possible outcome will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Now next is your 2, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6. Yes, next one is 3, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Now next one is 5, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. That is total number of outcome is 36. That is 36 outcome. Outcomes. Any doubt? Any problems? Now question is 5 will not come up either time. 5 जो है वो आएगा ही नहीं. किसी भी ऐसा केस देखो जिसमें 5 है ही नहीं. अब देखिए 25 ओके outcomes. yes 5 will not come either. 5 is not coming here. 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 5 is not here. 5 is not here. 5 is not here. 5 is not here. 5 is also 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 not here. 5 is also. That is your case. 5 is also not here. 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 How many So is? there are 11 5 are there. So we will subtract 36 minus 36 11. minus 11, 25 outcomes. अब ये कितने केस अब फर्स्ट बताइए मेरे को 25 by 36 25 by 36 and next is 5 will come at least once. 7 months. At least month मतलब 5 will come at least मतलब क्या हुआ है भाई So that 2 5s can come, but 0 5 cannot come. ओके And means 1 5. एट लिस्ट वन माने कम से कम एक हो सकता है, उससे अधिक भी 5 हो सकते हैं. ओके नाउ 1 5 हियर इज 1 5 नो प्रॉब्लम्स. दैट इज 1 case 2 case 3 4 5 6 7 8 9
9, 10 and 11. Any doubt, any problems? 11 by 36. No, sir, no doubt. 11 by 36. 11 by 36. Yes, Priya, any doubt, any problems? Priya Tiwari. Okay. Now, question number your 25th is your activity questions. Yes, sir. Correct or not correct? Now, exercise 15.2. Yes, sir. Exercise 15.2. Have you write down the probability of this question? Is it enough? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we have written, sir. Okay, okay. Now, exercise 15.2. Exercise 15.2. Two customers, Syam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Same week है, different week नहीं है, same week की बात हो रही है यहाँ पर. Each is equally likely to visit the shop on any day as and another day. What is the probability that both will visit the shop in the same day, consecutive days or different days? And two customers are Syam and Ekta. Syam and Ekta. Then these optional activities questions are basically based on higher order things. Yes. Syam and Ekta. This is your Tuesday, Wednesday, So is it one? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Now, Tuesday, Wednesday, Thursday, So we need to take out doublets. Thursday, Friday, and next is your Saturday. Yes. Syam is going to shop on Tuesday. Ekta is also going to shop on Tuesday. Syam is going to shop on Wednesday. Ekta is going to shop on, या ऐसे कर सकते हो आप. Syam is going to shop on Tuesday. Tuesday, Tuesday. Tuesday, Wednesday. Tuesday, Thursday. Tuesday, Friday. Tuesday, Saturday. Now next is your Wednesday, Tuesday, Wednesday, 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 Thursday, Wednesday, Friday, Wednesday, Saturday. Any doubt, any problems? No, sir.
No, sir. And now Shyam is going on the shop on Thursday. Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, 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 Friday, Thursday, Saturday. Now Friday, 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 oh Friday, Tuesday. Sorry, Friday, Tuesday. First case is Friday, Tuesday. इन्होंने 6 में से इन्होंने 3 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट नहीं दिए। हाँ, और उससे पहले इन्होंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है। ये क्लासेस अप्रैल महीने से स्टार्ट हुई थी, अप्रैल से, ठीक है? Tuesday. हाँ, Friday, अप्रैल से Wednesday. start हुई थी। जून में कोरोना की वजह से एक नई Friday, Wednesday. conditions, Friday, Thursday, मई में sorry, Friday, Friday, start हुई थी। Friday, Saturday. सात जून से कंटिन्यू चल रही है क्लासेस। उन इस बीच में उन्होंने एक Now Saturday, Tuesday, Saturday, Wednesday, Saturday, Thursday, Saturday, Friday, और Saturday, Saturday. Your table has been prepared. Now come to the question. That is 25 outcomes. Check it. 25 outcomes. फीस भी पे नहीं है, पिछले साल की क्वार्टर की फीस बची हुई है। How many outcomes? आपको ये सारी चीजें पहले क्लियर करनी होगी ना। 25 hours. 25. That is 25 outcomes. Now, same day, both will visit the shop on same day. So 5. 1.5. 1.5. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Quality that both will visit the shop on same day. Both will visit हर कोई स्कूल नहीं देता है, आप try visit the shop लेकिन आप अगर कंटिन्यू on same day. On एडमिशन को यहाँ पे है ही same day. तुरंत को क्लासेस It's same. That is So it will be 5.25. That is 1. 5.25, that is 1/5. 1.5. Okay. ये 7:40 Now next is start होती है तुम्हारे आगे से next is और 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं 1:10 तक। हाँ हाँ 6 सब्जेक्ट next will be your Consecutive days. consecutive days. Consecutive days. Consecutive days क्या होता है मुझे बताओ। अगर श्याम क्या है, One after another. A series. अगर श्याम ट्यूसडे को जाता है तो एकता को वेडनेसडे को जाना चाहिए इसी हिसाब से। ट्यूसडे वेडनेसडे consecutive days है, वेडनेसडे थर्सडे consecutive days है, वेडनेसडे फ्राइडे consecutive days है, फ्राइडे सैटरडे consecutive days है। अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो उनको नहीं करना। Am I right or wrong? अब उसको आप एब्सेंट भी मान रहे हैं। Yes, sir, you are Right, sir. Okay. Now find out the आएंगे क्या नाम पे ऑनलाइन उन्हीं का now Tuesday consecutive day or not? धोखेबाजी वाला काम नहीं है कि आप Tuesday No, sir. Tuesday Wednesday No, sir. Tuesday Wednesday Yes, sir, it is 4:25. Thursday, Friday. listen Friday. Tuesday Saturday. Thursday not consecutive, Tuesday Friday not consecutive, Tuesday Saturday not consecutive. आप वॉच करिए। Now next is your Wednesday Tuesday Yes, sir. Wednesday Tuesday consecutive है। No, sir. Why? Mhm. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सेम वीक की तो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सेम वीक की तो बात कर रहे हैं। अगर एकता क्या है, अगर ट्यूसडे को जा रही है तो शाम वेडनेसडे को जा रहा तो वो तो कंसेक्यूटिव, नो प्रॉब्लम। सारे रिकॉर्डिंग के बनेंगे। उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, पर डिफरेंट वीक थोड़ी है, सेम वीक की तो है। साल के अंत में वो सारी चीजें जमा करनी होगी ना तभी। वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेम चीज, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. बोर्ड का है, बोर्ड में तो हमें सब अब देखिए आप।
Wednesday, Thursday, Wednesday, Friday, Wednesday, Yes, sir. Wednesday, Saturday है क्या? Okay, very sorry. ये Wednesday, Saturday है. सुबह ऐसे ही अटेंडेंस हमें तो कुछ भेजा नहीं हो तो- हाँ, Wednesday, Saturday. हम कैसे मान लेके आए हैं अब देखिए तो इसके लिए आपको भी थोड़ा Thursday, Tuesday, बीच में Wednesday आ गई, नहीं होगा. लोड होता है Thursday, Wednesday नहीं हो जाएगा. आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना Friday, Friday ये भी हो जाएगा. Friday, Saturday के बीच में Friday आ गई, ये नहीं होगा. अब देखिए फ्राइडे ट्यूसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे थर्सडे हो सकता है और फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है. तो इनके फादर सैटरडे ट्यूसडे हो सकता है, इसके बीच में बहुत सारे डेज आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता. सैटरडे वेडनेसडे नहीं हो सकता, सैटरडे फ्राइडे नहीं हो सकता, सैटरडे फ्राइडे. आप उनसे बात कर लीजिए अब देखिए कितनी होगी, हाउ मेनी? इसको होना ही पड़ेगा अगर बच्चा आपको झूठ बोल रहा है sir, 8/25 at 8. 1 2 3 एक्शन लेना पड़ेगा ना wait, wait, आप लोग लगाइए ना वो पीछे 1 जब आप लोग नहीं लगा 2 सकते तो 3 हम लोग कैसे लगाएंगे 4 5 6 7 8 8 probability that both will visit on consecutive days. Consecutive days. फीस की पेमेंट हुआ That is 8/20. 25. Third question is, third part is Different days. different days. Different days. Okay. Both will visit on the shop on same day. Both will visit on the shop on same day plus both will visit not shop on the same day is equal to 1. चीजें तो आप ही बता सकती हैं हम Am I right or wrong? हम उसको अगर हम बात भी करते Yes, हैं sir. तो हमारी कितनी सुनता है हमारे कितना सीरियस ले सकता है Both will visit on the shop on the same day. Both will not visit on the shop on both day. Probability of both will visit on the shop on same day. Same day. लेकिन आपके ऊपर ज्यादा 1/5. 1/5. आप उनके माँ बाप है ना उनके पेरेंट्स आपके ऊपर That is 1/5 plus 1/5 plus probability of not happening an event. यहाँ कर दो यहाँ पे 1 plus 1/5 plus probability of not happening an event equal to 1. That is 4/5 का आंसर नहीं है इसका, देखना. Yes, sir, it is. Do it fast. Now question number 2 is, इसके लिए तो एक ऐसा नहीं होता ना in question number 2 हर चीज करनी है I am telling you please complete the table. हम आपको पहचानेंगे कोई भी टीचर कैसे जाएगा या 1 plus 1 plus है इसमें 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 1 plus 3 is 4, 1 plus 6 is 7. Can you complete this table? So can you please Yes, I will. Please आपको read the question number 2 in your book. ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप किसी भी स्कूल जा सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक Please read the question in your book. इसलिए नहीं था पढ़ने में और आता ही नहीं था स्कूल Number in the first row 1 2 1 2 2 3 3 6 and number on the second row 1 2 2 3 3 6. You have to add these respective rows and complete the table. 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 2 3, 1 plus, complete. What is the probability that total score is even? आपने 36 आउटकम है तो जो इवन है उनको फाइंड आउट करना आपने. कर लोगे? Yes. Only 6, at least 6 means 6 and more than 6. Okay, try it in homework. Okay, Okay. do in homework. Okay, sir. Now question number 3. बिल्कुल आइए Question number 3. Do it fast. Only 5 minutes left.
Question number 3. मैंने वाले डाल देंगे हमने वाले भी हाँ हाँ वो भी मैंने ठीक है मैम चलिए A bag contains 5 red balls and some blue balls. Let number of red balls. Let me. Number of red balls तो given है ना? Yes. Number of red balls. 5. Let number of blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, let number of blue balls. How many? आपको पता है कितनी? नहीं पता ना? X. Total number of balls. Total number of balls. X plus 5. 5 plus x or x plus 5. 5 plus 6. Yes. Probability of red ball. Probability of red ball. Upon X plus 1. Red ball. That is 5 by 5 plus x. Next is probability of a blue balls. X by 5 plus x. According to question. अब क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर्ली से और बताइए क्या करना है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी का कुछ क्या है डबल ट्रिपल कर रखा हूं मैंने. देखिए अब यहाँ पे क्या है ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 by 5 plus x और ये क्या है इक्वल का साइन लगा दिया मैंने लिख दिया x by 5 plus x. अब ये क्या है आपके पास रेड है इधर आपके पास ब्लू. हमने इसको इक्वल करना है. अब स्टेटमेंट को पढ़िए और करिए. Now if the probability of drawing a blue ball is double that of red ball. ये प्रोबेबिलिटी है ये डबल है इससे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा Yes. क्यों करना पड़ेगा why So because to make it equal. to make it equals. Okay, concept is clear or not? Yes, sir. Okay. This is cancel out. This is cancel out. X is x is equal to 10. So the blue ball should be 10. Yes. Therefore, number of determine the number of blue balls in the bag. Therefore, number of blue balls in the bag. In the bag. 10. Equals to X is equal to 10. Okay. Do it fast. Have you done or not? Sir, done. Yes. Done. Okay. Question number 4. If a box contains 12 balls out of which X are black. मैं इसको रेज कर रहा हूँ Sir, it is the same question. for different. A box contains 12 balls out of which X are black. Total number of balls 12. number of black balls X. X. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Total number of balls 12. 12 plus 6. 12 plus x. Question numbers. No, the total are 12. The total are not in understand. Okay, wait. 12. Okay, wait. That is question numbers 4. Total number are 12.
Yes. Probability of a blackboard. Now what is the X probability upon that it will be blackboard? Probability of a blackboard. X by 12. Of a blackboard. It is x by 12. Yeah. If 6 more black balls are put in the box after adding 6 more black balls, total number of balls, how many? 12. Total number of balls, 18. number of balls, 12 plus 6, that is 18, and number of black ball will be X plus 6. number of black balls will be x plus 6. Now probability of a black ball, x plus 6 X by plus 2. 6 upon 18. इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उससे क्या डबल होगी शायद इसमें. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल दैट ऑफ इट वाज बिफोर. अब जो हमारे पास केस फर्स्ट है यहाँ पे ये x by 12 यहाँ पे, और जो सेकंड जो केस आ रहा है यहाँ पे x plus 6 by 8, ये जो है डबल है उस प्रीवियस वन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. x by 2x upon 12 is equal to x plus x 6. plus 6 by 18 multiply by 2. To do LHS. Yes. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 1s are 6, 6 3s are 18. Now 3x is equal to x plus 6. Now 3x minus x is equal to 6. Twice of x is equal to 6. Twice of x is equal to 6. And x is equal to 3. Check your answer. Yes, sir.